Hi guys, so let's start Nifty daily analysis for 25th of September. First of all, sorry for the delay. Videos थोड़ा लेट है because the main thing is कि मेरा जो है वो बैक टेस्टिंग है. It is not analysis, like it is not prediction. It's back testing. So like I feel that it's more important to have a better content for back testing because I don't predict, and why I don't predict is this reason. I am not a SEBI registered advisor or broker. The content in this video is only created for educational and learning purposes. Please do your own due diligence before investing. The best is take help of a financial advisor, and for any recommendation or to buy or sell any security or financial instrument for the same. So what we are trying to do over here is कि जो कि वी विल एनालाइज द पास्ट बिकॉज जैसे मैंने पहले वीडियो में बोला था कि इट्स ऑलवेज लाइक गो बैकवर्ड नॉट फॉरवर्ड. सो वील एनालाइज द पास्ट, विल नॉट प्रिडिक्ट. द रीज़न विल नॉट प्रिडिक्ट is because prediction create biases in the mind. और जो ह्यूमन है लाइक द बाइसेस क्रिएट्स इमेजिनेशन. अभी एक बुक आई थी युवल नोवल हरारी की, होमोडियस. In that he told that whatever the humans are able to do is somewhere because of the imagination. I think it was homodius only, or please fact check kar lena. So it is because of the imagination, because we are able to imagine stuff. That's why we are able to like progress so much as compared to other species in the planet. But imagination in trading is not a good activity. Please don't do it, otherwise you will end up losing your money, and in the process like people lose their life also. So let's coming back to the point. So Nifty on 20 so this was chart for 25th of September. So Nifty was pretty confusing. I first of all, I don't use any indicators. I believe pure in price and volume. I believe that uh, everything is made of price and volume, so indicators should be in the head, not in the screen, because they just add noise. तो फर्स्ट 5 मिनट्स में हुआ ये था ऑन निफ्टी कि इसने बना दी थी हैमर ऑन द डाउन साइड. दिस इज़ प्रेटी कंफ्यूजिंग. उसके बाद ये ऊपर गया फिर नीचे गया. तो फॉर मी आई नो अ लॉट ऑफ पीपल विल टेक अ ट्रेड सीइंग हैमर, बट आई विल नॉट टेक दिस ट्रेड बिकॉज अब जो प्रीवियस डे था it was a downside, it was all down, it was not up. एंड देन नेक्स्ट डे, जब ये नेक्स्ट डे ओपन हुआ तो इसने एक डाउन साइड मतलब इट मेड एन हैमर. तो मेरा माइंड में पहले ये आया कि दिस कुड बी अ ट्रैप. तो इट्स बेटर बी आउट. लाइक it's okay not to make money than to be in a trap and lose. Why? I will tell you now. So I have, this is my trading journal. uh, so the thing about this trading journal, ये मेरी actually पूरी trading journal है. Over the time, like as I become proficient in sharing stuff, तो मैं आपको ये हर column के बारे में बता दूंगी that what's happening in each and every column. So this is like I don't write trades on paper. I have like digitalized my entire trading journal. This is my template. I highly recommend that make template as per your experience. Don't buy any template, don't make a template based on this, क्योंकि ये मेरा experience है, and experience differ from person to person because trading involves money and money involves emotions, and emotions are different in different people. So always have a trading journal as per your experiences. Design it as per your experiences, and it is a process. Don't take a shortcut in that process. So I have like emotional checks and balances over here. Then so this checks everything, that whether I have a ego trading confidence and all that. Then this is my trade quality. So I do a lot of stuff over here. Then like I, because I'm an intraday trader, so I make sure like this is big printed in yellow, that carrying forward trade or not, and if yes then why, the main question. So this is there. तो अभी तुम आई ऑलवेज लुक फॉर स्टॉप लॉस. ओके, तो मेरा जो यहाँ पे स्टॉप लॉस आ रहा था, तो यही स्टॉप लॉस था. दिस वाज माय स्टॉप लॉस आफ्टर सम टाइम. ये है 25003. तो निफ्टी एट द ओपन
was 25063, at previous close was 25063. मुझे ओपन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि निफ्टी प्रीवियस क्लोज क्या था. तो डिपेंडिंग ऑन डैट निफ्टी 24900 का सी एंड 24900 पी एंड 24200 सी. Now, because the market is on downside, we take 24900 P and not the call right now. So the thing is कि यहाँ पे ये दो ट्रेड्स इसलिए है because this is majorly straddle. स्ट्रेडल में दो लेग्स होते हैं, कॉल एंड पुट के. आइदर यू आर अ बायर और अ सेलर, यू ऑलवेज हैव टू लेग्स इन स्ट्रेडल. द थिंग इज दैट राइट नाउ वी आर डूइंग स्टेप वन, विच इज वी आर बाइंग, वी आर अ डिस्क्रिशनरी ट्रेडर, सो वी आर बाइंग वन लेग. पहले एक लेग, फिर दूसरा लेग, फिर दोनों मिला के स्ट्रेडल. सो स्ट्रेडल इज लाइक स्टेप 3 और स्टेप 4. सो स्टेप 1 इज अ डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग. तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज 24900 पुट. नाउ पुट प्राइस एट ओपन, 24900 का पुट ओपन करते हैं. इसका प्राइस कितना था एट ओपन? दिस वाज 36.95. ओके, सो 36.95 मेरा पुट का प्राइस था. अगर मैं ओपन में ही पुट ले लेती तो मेरा प्राइस कितना बनता? ओके, वो बनने के लिए पहले मुझे ट्रेडिंग कैपिटल डालना. सो ट्रेडिंग कैपिटल फॉर द डे इज़ 100,000, बिकॉज 100,000 तो इंडिया में ट्रेडिंग के लिए सबके पास होते हैं. फिजिकल कैपिटल किसी के पास नहीं होता है, बट ट्रेडिंग के लिए 100,000 सबके पास होते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद 100,000. अब 100,000 को हम डिवाइड करते हैं, सॉरी 36 पुट प्राइस एट ओपन, तो अराउंड 2700 क्वांटिटीज़ हम लोग बॉट कर लेते हैं अगर मैं ओपन में ही ले लेती इसको. बट ऐसा हुआ होता नहीं है, ये रियल लाइफ है. तो बैक टू रियलिटी. तो माई दिस वॉज, सॉरी, माई स्टॉप लॉस वॉज 2503. नाउ ये मेरे स्टॉप लॉस में फर्स्ट आया यहाँ पे अराउंड हेयर, विच इज़ लाइक 1040. बट आई विल नॉट टेक दिस ट्रेड if I'm trading with large capital, because this is the first pullback. First pullback always have a first pullback always leads nowhere, और नहीं तो ये फिर swing ही हो जाता है, तो like there's no point. So ये first pullback था, तो आई वुडंट गो फॉर दिस ट्रेड. बट इसने मुझे बता दिया था, लाइक दिस प्राइस एक्शन डिड टोल मी कि मार्केट इज गोइंग डाउन, इट्स मोर ऑन द डाउन साइड, इट्स नॉट ऑन द अप साइड. टू गो ऑन द अप साइड देर आर लॉट ऑफ हर्डल्स विच इट हैज़ टू क्रॉस. सो लाइक लुक डाउन, नॉट अप. तो अब उसके बाद सो दिस इज़ अराउंड, अब यहाँ पे तो 2503, this is gone, so this is the trade I would take. This is a decisive marubo, 1140. This is like first 5 minute ये बन गया, so 1145 is where I enter. So 1145 इसने तो नहीं, so this is 989. So at price, so quantity bought, if entry, so entry time would be 1145. 1142 डालते हैं, 1142 एफिशिएंसी में 1142 ही आ जाता है. ओके, सो एंट्री प्राइस एट 1142 वुड बी अराउंड, अगर मेरा 1142 लेते हैं तो 1142 का एंट्री प्राइस, 1142 का एंट्री प्राइस, ओके, दिस इज 1142 या 1145, 49, 49.80, या 49.80. So this is 49.80. Quantity bought will be my capital divided by entry price. तो ये रियली होता, ठीक है, ये रियल है. तो 2008 क्वांटिटीज़ बॉट होती है, इसको 75 से डिवाइड कर देना तो उतने लॉट आ जाते हैं. तो ये रियल है कि ये मॉडल में, इस मॉडल के अकॉर्डिंगली अगर हम इस टाइम पे एंटर करेंगे तो हमारा जो क्वांटिटी बॉट होगा वो 2008 होगा, 49.8 के उसमें. अब रीज़न ऑफ एंट्री आप डाल सकते हो, लाइक व्हाट इज़ द रीज़न फॉर एंट्री. मेरे लिए रीज़न फॉर एंट्री सिंपली यही था कि ये स्टॉप लॉस के पास है और इसने सेकेंड टाइम मेरा स्टॉप लॉस वो किया था, लाइक डाउन कर दिया था. सो दैट इज़ द रीज़न दैट आई एंटर्ड ओवर हियर. ठीक है, सो व्हेन आई एंटर्ड ओवर हियर, तो रीज़न ऑफ एंट्री यू कैन पुट लाइक इट went down from the day's low. So stop loss in Nifty
Okay, so my Nifty stop loss is 2503. 25003 will be tested. It will be tested for stop loss hunting. तो थोड़ा ऊपर रखते हैं, 25015 ये रखते हैं. Now the put price at a stop loss, expected put price as a stop loss. If Nifty goes to 25015, what would be the put price? Uh, you can make a model. I know people who have made models of call that option model. You can do that, but because we are on step one, तो बहुत raw लेते हैं. Like let's do raw because that is how we all started. So अभी पुट प्राइस एट दी 11, इसमें 1140 का ट्रेड था ना ये, तो 1140 के ट्रेड में, सो दिस इज़ देयर. तो स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ लगा देते हैं. अगर 25013 आया तो 44 तो चले ही जाएगा. थोड़ा सा लॉजिक यूज करके यहाँ पे कर लेते हैं 1144 का. वाई 44? It's very simple. Like there's no logical reasoning in there. Like there is a logical reasoning कि this is the most tested price right now. तो this ले 1144 का this is 44.35. Okay, put price at a stop loss. Stop loss reason and logic वो आप लिख देना कि this is the reason that it is the most tested price. So let's do it 44.35. So stop loss in points. Points में कितना stop loss दिया? 49 minus 44. जो मैंने बाय करा और जो मेरा स्टॉप लॉस का प्राइस है, तो मेरा करीबन 5.45 का मेरा स्टॉप लॉस है. नॉट ट्रेडिंग कैपिटल एट रिस्क, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेरा ट्रेडिंग कैपिटल एट रिस्क जो है दैट इज़ 100,000 मल्टीप्लाइड बाय दी sorry, okay, I think I'm forgetting something. Oh god, yeah, this is, so this is this multiplied by d1. Okay, now so d1 divided by d23 actually. So this is, sorry, so this multiplied by quantity bought. Trading capital at risk is 10,094. So this, my trading at risk is this multiplied by this multiplied by 100. तो करीबन 11% का मेरा ट्रेडिंग कैपिटल एट रिस्क है. द थिंग इज़ कि आई नो आई एम गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ यू नो बैक स्लैश ओवर दिस कि ये लाइक 11% रिस्क के साथ कोई ट्रेडिंग कैपिटल करता है क्या? इसके मेरे पास दो आंसर है. पहला ये है कि दिस इज़ नॉट फॉर बिग प्रोज, यू नो, लाइक द मोर यू डू इट द बेटर दिस बिकम्स. ये बिल्कुल जो स्टार्ट कर रहे हैं लोग, लाइक पीपल नॉट इवन स्टार्टिंग, लाइक पीपल जिनने थोड़ा टाइम लगा दिया है बट वो लोग मॉडलिंग नहीं करते हैं, ये उनके लिए है मेनली. बट हाँ, लाइक ऑप्शन इसमें 3 to 4% से ज़्यादा का वेरिएशन आप लेके नहीं आ सकते हो, बिकॉज यू आर एन ऑप्शन बायर. ऑप्शन बायर का यही होता है, लाइक इफ़ यू आर टेकिंग big capital, if you are working on big capital, be ready for stuff like this. And that is why intraday trading is very risky. This is the reason why intraday trading is at risky. बैठे बैठे 11,000 चले जाएंगे अगर प्राइस ऊपर नीचे नहीं गया. So yeah, this is the reality. Say whatever, this is the reality. This could be better, no doubt in that. But हाँ, अगर आप बैक टेस्टिंग करते हो तो ये सारी चीज़ें आती हैं. तो टारगेट प्राइस डिसाइडेड बिफोर हैंड. अब मैंने 5.455 का स्टॉप लॉस अगर मैं ले रही हूँ, तो मेरा टारगेट प्राइस तो मैं एटलीस्ट 15 तो रखूँगी. 1:3 का टारगेट प्राइस है, तो टारगेट एंड एग्जिट प्राइस मेरा हो जाएगा, मेरा जो बाइंग प्राइस है, एंट्री प्राइस है 49.8, और मेरा जो टारगेट प्राइस, टारगेट मुझे जो पॉइंट्स चाहिए डेट इज़ 15, तो 64.8 मेरा टारगेट हो जाएगा. ठीक है, अब डज इट गेट 64.8? अब देखते हैं. ये 56 के बाद डाउन आ गया था. ओके, इसने 56 लगाया, उसके बाद ये डाउन था. 15 मिनट में देखते हैं क्या हो रहा था. दिस इज़ अराउंड 14 220 220 220 220 का कहाँ है?
220, हाँ 220 में इसने काफ़ी वो करी है, उठक पटक करी है, बट लाइक कमिंग बैक टू रियलिटी। तो ये मेरा बना, उसके बाद ये मेरा गया, और उसके बाद ये आया। नहीं, आई थिंक आई शुड बी हेयर, ये तो मैं ये तो सो ओवर हेयर, ओके, सो ये गया 1206, 58.5, 60 का हाई बनाया है इसने, बट बिफोर मेकिंग 60 हाई ये स्टॉप लॉस हिट करके गया है। It has actually hitted all the stop loss. यहाँ पे this was a really nice candle, but this was a red flag. Then this all is a red flag. So what would have happened on this trade in real market? Like how I would have taken this trade on real market is I wouldn't have exited on in here क्योंकि ये तो अभी चल ही रहा है। अगर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया तो लाइक I would have saved myself, no doubt in there, because but we are not in trailing stop loss right now. So यहाँ पे बात करते हैं। So this happened, and I would have exited either on break even or I would have exited somewhere at 49.90. So my entry is at 49.8. I exited at 49.90. If I would have waited more than 49.90, yeah, like this would have become an emotional trade and I would have lost money क्योंकि ये गया यहाँ तक 45.80. So why would I exit this trade before reaching to this point? The reason is that I have an 11% risk. Okay, my trading risk is 11%. I would, and I am seeing this happening in the market real time. I am seeing all of this thing happening in the real time. I would just exit. I will take a trade again. I will just exit. So that is what but that is what I will do. That is my trading style. Someone else would do something else, and they are welcome to share their views in here, please, because that is how we learn. So why I discussed this trade was because this didn't worked out. This is a very, like, this setup, we saw this and this, so this didn't worked out because this happened. This just didn't worked out, so this is the reason, and this is live market. This actually happened in the live market. So when you backtest, all of these things come up. Now going to the now let's go to the another trade. So now we know that this didn't work out. So now it tested, okay, so it tested around yeah, so it tested this level, the the lows of the opening candle, and फिर ये आया, फिर ये, so this became this. So this is a pure signal saying that कि this is the time to enter. I think I would have entered over here only. So 115, yeah, so now this is ready. I would have entered at 110. I will not do anything. So now put price at open was 36.95. So the quantity bought is 100,000 divided by 36.95, around, नहीं 36 नहीं था, पुट प्राइस अपना था इधर, पुट प्राइस था 36.95, ठीक है, okay, so 27. So entry time is now 13:10 p.m. So now so what is the entry price? If I enter over here, what is the entry price? Mm, So this, so my entry price, तो या 1345, नहीं अपन तो यहाँ 1306. सो या दिस इज़ लाइक, ये बोल दिया इसने बॉटम आउट हो गया, अब यहाँ से ऊपर ही जाना है, तो 13 दिस, सो 1312, नाउ लेट्स फर्स्ट डिलीट दिस, ओके, सो 1312, सो या दिस, yeah, 45.70. So let's not take 45.70, इसका मिडिल लेते हैं, 47, 46, yeah, 45.65, 45.70, let's take. So 45.70 quantity bought is again
D1 divided by 45.70. So 2188 quantities are bought. The reason of entry, that we are seeing a clear breakdown in the over here. Sorry, my stop loss is again over here only. So the reason for entry is that like we saw a clear breakdown over here. So okay, now so we got a reason of entry. Stop loss in Nifty as usual, 25015. We can actually add a column over here. Like I will add a column over here, that quantity bought, reason of entry, stop loss. I will say that it's always good. So this will be the see, price of Nifty at the time of buying, at the time of buying. So this will be a very good check that what we are doing. So this is 25 this, so the price of Nifty at the time of buying would be 24,989. So 24,989. इसको और कर सकते हैं, but like I don't see a point doing this in a video. Put price at stop loss. Expected stop loss में मेरा put price 1310. This is there 1312. So 45. Stop loss I would surely put in here. I wouldn't go beyond here. So that is 41.15. So 41 कर देते हैं. Let's do 41. So stop loss in points. So this is entry again minus this. So this is 4.7. So now trading capital at risk is D1. No, sorry, it's not D1. It's this multiplied by this, the stop loss in points. So that is 10,284. So this is, see, this stop, now this has become better. You know, that's why I say trade of the day. So this is around 10%. 10% is my risk per capita. So is my risk. And this is the reality of buying. Like whoever says whatever, this is the reality of buying, and that's why I am a buyer. And I think everyone should start, like if you know maths, then start from buying, not from selling, because selling is easy. Selling is an ecosystem, you know. You learn a lot in buying. The mistakes are actually done in buying, and you either learn or you become a seller. So target price decided beforehand. So my 10%, 4.7. So let's do 15. Target and exit price. So that will be, my entry price was this, and my so my target is this, 60.7 का मेरा target हो जाता. Now reason of exit, points gain. Let's see how much point I gain. Now let's see what would have happened in real market. I entered somewhere here, 1312, went up, came down. It hit my stop loss. It hit my stop loss at 1348. Now, will I exit this trade? Let's see. Uh, 15 minutes. Where is 15 minutes? Okay, this is 15 minutes. So this has happened at 1348. Um, so this is why, like, I turn from algo to systematic trading. So 1348. 1348 May, in 15 minutes, this is what was going on. Nah, I wouldn't have exited from this trade. This is 1345 candle. It took a resistance and came down. Then this is 15 minutes. This is this candle. Now this was in making. Mhm. This is a 40-minute scale is better. Yeah, this is in making. I wouldn't come down. Like between this and this candle, if I'm seeing this kind of pattern in 15 minutes, I will not exit. I will like, I will take a ride wherever they go. So what would have happened? I wouldn't have exited in here. There's no point. Then went up, like went up. I am above, and then this. So this is again something, but this is very normal because this is like four for this. Now again coming to 15 minutes. No, so this candle was made, then this is made, then this. Nah, like if you keep on doing this, like you will realize that I wouldn't go out till a lot of level. So now
this would be there, this. I would have exited somewhere here. This was made, this is 70. Let's say our execution efficiency put us over here, 65.05. Okay, so points gained. So I would have actually exited 65.05. Actual exit price 65.05. What exit disciplined? Yes, it was disciplined, it was not emotional. तो पॉइंट्स गेंड कितना हुआ मेरा 65.05 से आप हटाओ एंट्री प्राइस, दिस इज़ माय पॉइंट्स गेन, ठीक है। पीएनएल कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी बॉट से, क्वांटिटी बॉट कितना है 2188, तो 42 का पीएनएल आ रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड बिफोर हैंड कितना किया था मैंने, रिस्क था मेरा 4.7 का, रिवॉर्ड था मेरा 15 का, तो 0.331 का मैंने रिस्क रिवॉर्ड रखा था। सही है क्या? हाँ। अब अभी ड्यूरिंग एक्चुअल ट्रेड मेरा रिस्क था 4.7 का, मेरा रिवॉर्ड जो आया डेट इज़ 19.35, 0.25, 1:4, पहले 1:3 था, अब 1:4 आया। सो नाउ व्हाई आई एम डूइंग दिस, ये एक्चुअल निफ्टी एनालिसिस मैं कर क्यों रही हूँ, इट इज़ अ डिफरेंट एनालिसिस। इसका रीज़न क्या है करने का, मैं आपको ये बताती हूँ कि आप ये 42 मत देखो, डोंट सी दिस 42, उससे पहले जो लॉस हुआ वो देखो, और ये जो है ना 10,000 का जो लॉस है ये है। हाउ टू मिनिमाइज दिस इज़ व्हाट वी वांट डू। द थिंग इज़ कि दिस लुक लाइक अ ट्रेड, दिस लुक्ड लाइक अ वेरी प्रॉफिटेबल ट्रेड। ये तो जिसने लिया ठीक है, इट्स नाइस, बट द थिंग इज़ कि दिस लुक्ड लाइक अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। तो अब यहाँ पे इफ़ यू आर अ डिसिप्लिन ट्रेडर, I don't think so. Like back testing, like this is the setups which we need to weed out. These are the setups which we need to weed out, and that is why all of this is there. जो actual trade जो मिला put buyer को, that was here. That was actually here. इधर पे मिला, and अगर better execution efficiency है यहाँ पे मिला, but I wouldn't wait till here because ये तो मतलब आ गया. This was like a third pullback. So that's all for the that's all from today's analysis, and please like and subscribe to my channel, leave your comments. I will really appreciate I would really appreciate like how I can improve my work. I am very new, so please leave your comments, and thank you very much. See you in next video for 26th analysis.